खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. नमस्कार सबको, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्ण to everyone. I have with me Shri Narinder ji, always faithful and very kind and very nice to Dil Diyan Galla, and always there whenever we ask him. So big friend and big, you know, I would say helper of Dil Diyan Galla, and always there. So मैं कहती हूँ कि भाई ऐसे सब होना चाहिए when we can help each other. And this शब्द was so good, I didn't want to close it. मेरा बंद करने का दिल ही नहीं कर रहा था. इतना अच्छा लगा है. I mean sometimes आवाज़ होती है ना किसकी, it's like a very commanding or very this thing, very nice voice. And as a lot of you must be knowing about Shri Narinder ji, पहले मैं ये उनके introduction करती हूँ. It's been a long time मैंने नहीं करी. And then after that we'll go for the world peace prayer, and then we'll go to our topic, which is very interesting today. But let me just say a little bit about our friend Narinder ji. पर मैं सबको कहती हूँ आपका आफ्टरनून है, मॉर्निंग है, जहाँ भी है आप हमारे को ज्वाइन करा करो. हमारे प्रोग्राम्स होते हैं Wednesdays and Fridays, and we also have some specials if anybody cannot come on those days, and then we can accommodate them on a different day. So but Narinder ji जो है, he holds a master degree in economics and Bachelor of Laws degree in LLB. He served the United States Treasury Department for 22 years and retired in 2009. And he has two sons, Sachin and Sandeep, and they both are physicians. His wife Urmila was a health profession RN and was with North Shore LIJ Hospital at Syosset for 26 years and retired in 2010. Okay. And Narinder ji is an initiated disciple of Swami Hari Harji Maharaj, founder, president of Gita Ashram, headquarter at Delhi, Kant, India. Since 1981, Narinder ji has been sharing the wisdom of Srimad Bhagavad Gita to the various strata of American society. He has been visiting universities, colleges, high schools, churches and temples of different denominations. He has profound conviction in the elitist teachings of Srimad Bhagavad Gita. He is the senior vice president of Gita Ashram of New York. He was also deeply involved in the teachings of Srimad Bhagavad Gita to the students of Gurukul, students organized by the Sadhu Vaswani Trust. Narinder ji is a board member of Long Island Multi-Faith Forum, and he has been making many presentations in the capacity of moderator and panelist. He has been involved in various community projects and activities. He is also involved in Mahatma Gandhi Jayanti celebrations, Shanti Fund. Narinder ji accepted an assignment with Gayatri Gyan Kendra in Melville, New York, to share the wisdom of Srimad Bhagavad Gita to the parents as well as senior students. Narinder ji served as a chairperson of Meditation Forum of India Association of Long Island, ILI, from 2016 to 2020. I'm not sure if this is still going on, Narinder ji. Abhi nahi ho raha? They have no appointed again me this year again. Okay, that's good. At present, he is a chairperson of Divine Mantra Meditation. He's on the board of directors of Interfaith Institute of Long Island, IFI. He is an executive member of Indian American Forum, IAF, of Long Island. He's on the advisory board of Domestic Harmony Foundation of Long Island, DHF. He's a member at large of the Association of Indians in America, New York chapter AIA. He's a life member of Arya Samaj of Long Island. He's on the board of trustees for Shri Ram Sharanam Temple, Hicksville, New York. Narinder ji is an accomplished speaker in the art of motivation and inspiration. Srimad Bhagavad Gita is his passion and mission. So here we have Shri Narinder ji right with us right here, and we are very lucky to have him because he has a very busy schedule as always, but he always makes time for us. So we are very lucky to have him with us. That's what I would like to say. And मैं चाहती हूँ नरिंदर जी, वेलकम टू दिल दिया गल्ला दिस फ्राइडे शुक्राना प्रोग्राम. तो आप भी अभी वेकेशन से होके आए हो, फ्रेश होकर आए हो, गर्मियों से सर्दियों से निकले थे, went to a warm weather, so did I. And so shall we start off with a world peace prayer?
Or would you like to say something before? To first of all express my deep sense of gratitude to you for this introduction. I don't know how you compiled that, and it makes me humble. And really, really, humility is bubbling in my heart after your introduction. We have been associated on this platform with the Dil Diyan Gallan for, I think, 4 or 5 years now. Yes. Our chemistry worked very well. And one day I want to introduce you. Oh, And yes, and this is a unique platform. You bring different expertise on this platform to share the superior thoughts to the community. And the impact is great. Beautiful singers and other subjects of interest to the community. So kindly keep it up. We are with you, around you, behind you. thank you. So Thank you. we will start now with word pair, and then we will take up our today's topic. Yes, that's right. That's what we'll do. Yep. Om Vrakatunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakareshu Sarvada. Om Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudahaja Mangalam Pundarikaksha Mangalaye Tanu Hari. Om Purnamida Purnamidam Purnat Purnamudichyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vishishyate. Om Shantakaran Bhujagashayanam Padmanavan Suresham Vishwadharan Gaganasadrisham Megavarnam Shubhangam Lakshmikantam Kamalanayanam Yogi Bhridyana Gamyam Vande Vishnu Bhavabhayharan Sarvalok Ekainatan. Om Triambakam Yajamahesh Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamev Vandanam Mrityor Mokshiya Mamritat. Om Dhyo Shanti Antarikshagvam Shanti Prithvi Shanti Rapa Shanti Roshadya Shanti Vanaspatya Shanti Vishvedeva Shanti Brahma Shanti Sarvagvam Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Redhi. Om Shanti Shanti Shanti. Om Astoma Sadgamyam Tamsoma Jyotirgamyam Mrityorma Amritam Gamyam. Om Shanti Shanti Shanti. Om. By the invocation of these divine mantras, we are seeking the blessing of the Almighty to grant peace on this little globe where there are 7.8 billion people are crowded. And this is very bad time in certain areas of the world. A lot of killing and brutality is going on a daily basis. So we seek Almighty Bhagwan to grant peace to these areas and give strength
to all around to become peaceful. And I say always, peace starts with us, with you, with me. We must become peaceful because you can give the message to the world when you are peaceful. Otherwise, that is not effective. So become peaceful at home with your friends in the society in which you live. And it is your fundamental, ethical, moral, and religious duty to be peaceful and make people peaceful. I am back to you, Binaji. No, you're right, 100%. Narendra ji. Aajkal, we need peace all the time, but nowadays the things are really, really very critical in some places. And some wars and all are going on for a long time. They need to stop to get peace, otherwise things are going to get worse. So we want to stop all, we really, jitne peace pray karoge is going to have a lot of effect. So we should start, everybody should do that. When we are doing it, aap bhi ghar mein karo, aap bhi karo, do with your friends. The more we do, the better off we are, the better the world will be. So to bring peace to this world, we have to do peaceful prayers to bring that feeling into the people's mind. तभी होएगा सब कुछ. But anyway, Narinder ji, आपका आज बहुत ज़बरदस्त topic है. You suggested this one, which I asked you, and you said that we have so many temples, gurdwaras, masjids, churches, and synagogues. So why the deterioration of spiritual and ethical values? Why is that happening? When we have so many places to go and pray, but फिर भी deterioration हो रही है. In our spiritual and ethical values are going down. So आप थोड़ा इसको हम लोगों को समझाओ, because you're the one who's a guru and a shiri, and you can teach us. Thank you very much for opening this Pandora box. There's a lot of thought process. The topic is, then when on this planet, tiny planet, this is the smallest planet on in the creative universe, and it is crowded with, I just said that 7.8 billion people are there, and increasing day by day, and decreasing by deaths, but births are outpouring, outmatching the deaths. So it is crowded. It was not crowded 50 years back. So something we have to understand. ये इतने लोग कहाँ से आ गए? जाते भी हैं, लेकिन ये आ कहाँ से रहे हैं? From, is there somewhere a warehouse from where these babies are coming? And so it's a very phenomenal thought. Challenges you to think over. Don't go into the rat race. Sometimes think and what is happening around me. मुझे तो पता कुछ नहीं है. So इतने, I say 100 years before, there were joint family systems. Yes. उसमें जो थे आपके फादर मदर, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, and so on and so on. It was thought and believed that this is the family. Right. That was the family unit. अब देखो, it is nuclear family, husband, wife और उनके एक दो बच्चे. अगर वो भी बाहर चले गए, according to your courier, तो you and husband. So that is the definition of the family now. क्या हो गया? तो जब फैमिली में ऐसा हो गया, वर्ल्ड में भी ऐसा ही हो गया. वर्ल्ड इज डिवाइडेड. देखो, ईश्वर ने, वाहिगुरु ने एक जमीन का टुकड़ा दिया रहने के लिए, राइट? उसमें 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्से जमीन है जिसमें हम सब रहते हैं. और उस 1 हिस्से जमीन को आदमी ने बांट कर, काट कर, छाट कर 198 कंट्री बना दी है. उसी ग्लोब से छोटी सी 1/4 जो लैंड थी, उसके आदमी ने, ईश्वर ने नहीं, वाहिगुरु ने नहीं बनाया. ये कंट्री जो है, ये कंट्री हमने बनाए हैं, हमने. तो 198 कंट्रीज बन गए वो छोटी सी जमीन के. और जो कंट्री बना उसकी अपनी लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज है.
وہ آپ کی لینگویج نہیں بولتے اور اس کی اپنی باؤنڈری ہے، فینس لگا دی اس نے کہ یہ میرا کنٹری ہے، رائٹ. تو آپ دیکھو کہ جب اتنی بڑی ڈویژن آدمی نے خود کر دی اور کوئی بارڈر کی لائن پار نہیں کر سکتا، they will kill unless there are documentations. لیکن at the same time there is a bird and it flies from Amritsar and goes to Lahore and then it goes to Karachi, then it flew back to Afghanistan, then it goes to Sri Lanka, then it goes to Bangladesh, Burma, and comes back to Amritsar. Nobody killed. کیونکہ اس کا کوئی بارڈر نہیں ہے. اینڈ ہی انجوائے دی فریش ایئر، کیونکہ ایئر تو ایسے ہی ہے تو وہ اڑ کے ان سارے کنٹریوں کے جن کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں اینڈ وہ پھر امرتسر آ جاتا ہے. تو وی شوڈ ہیو بین لائک دیٹ. Yes, I agree. ہم ایسا اسی لیے یہ ہیٹ ہو گئی ہے کہ ایک ہی ہم لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے کنٹریز بنا کے، چھوٹی چھوٹی کنٹری ہم نے بنا کے اس میں اتنی ریسٹرکشن لگا دی ہیں اور مائنڈ جو ہے آپ کے کلوز ہو گئے ہیں. آپ کو پتا کہ میں جا نہیں سکتا، ادھر نہیں جا سکتا، ادھر نہیں جا سکتا، اور اوپر آپ جا نہیں سکتے، پانی میں آپ جا نہیں سکتے. تو اتنی ریسٹرکشن میں ہم رہ رہے ہیں. اور فیملیز کا بھی یہی حال ہوا ہے. جوائنٹ فیملیاں تھیں، جتنا پیار آپ کو نانے سے، دادے سے ملتا تھا وہ اب نہیں ملتا، وہ ہے ہی نہیں، تو ملنا کہاں سے. سم فیملیز آر فارچونیٹ بٹ وی آر ٹاکنگ آف دی میجورٹی آف دی پیپل آر ڈیوائڈ آف دیٹ لو اینڈ افیکشن. سو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ دیر آر ورشپ ہاؤسز آل اراؤنڈ ناؤ. پہلے ایک گردوارہ تھا، اب لانگ آئیلینڈ پہ مے بی 50 اور 40 مندر تھے 100، اب مے بی 200 مسجد تھے 2 اور ناؤ اٹ از 30 سیناگوگ تھے، چرچز تھے. So many these religious entities have been multiplied. What has happened to the people who worship? کوئی انگلش میں کہہ رہا ہے کہ ہے پربھو پیس، آئی نیڈ پیس. کوئی پنجابی میں کہہ رہا ہے، کوئی ہندی میں کہہ رہا ہے، کوئی اردو میں کہہ رہا ہے. سو ڈفرینٹ لینگویجز یوز کر کے ہم پربھو سے بات کرتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ واحد گرو ایک ہے، یہ تو نام ہے. کوئی کسی نے واحد گرو کہہ دیا، کسی نے ایشور کہہ دیا، کسی نے اللہ کہہ دیا، کسی نے کرائسٹ کہہ دیا، کسی نے موزس کہہ دیا. یہ تو نام ہے، لیکن جو اس کے پیچھے تھاٹ ہے، تھاٹ یہی ہے، تھاٹ کہ ایشور واحد گرو ایک ہے. اب واحد گرو سے جو باتیں ہو رہی ہیں سارے آل اوور دی ورلڈ، وہ اتنی لینگویج سے باتیں ہو رہی ہیں تو واحد گرو کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اتنا شور مچا ہوا ہے تو پریئر، لیکن وہ ڈفرینٹ لینگویجز میں باتیں ہو رہی ہیں. تو جب ہم جیسے ہم جرمن میں کوئی پریئر کر رہا ہے، رائٹ، میں پنجابی میں کر رہا ہوں، کر تو رہے ہیں ہم، رائٹ، لیکن جرمن والے کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے اس کا نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے، رائٹ. تو یہ جو ریگمر اور کریٹ ہو گیا ایسا نہیں تھا. تو اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آور باڈی. کیونکہ وی ہیو 3 types of body. One is the physical body, and then you have the emotional body, and then you have a spiritual body. Physical body, emotional body, and spiritual body. Physical body لوگ آپ دیکھو دی جرنل ایج جو ہے ایوریج بندے کی وہ بڑھ گئی ہے. لانگیوٹی جو ہے اٹ از انکریزڈ ان ایوری کنٹری. تو اس میں بیکاز دیر آر فیسلٹیز، لوگ جم میں جاتے ہیں،
there are other exercises they do to keep the physical body going on, and people are healthy. Outlook जो है healthy है. पहले नहीं था ऐसे. पहले 40-50 में जब लोग जाते थे 60 में तो आपको ओल्ड दिखाई देते थे. अब जो है 80 का बंदा भी आपको ओल्ड दिखाई नहीं देता है, राइट? That's true. तो या तो ये बात तो ठीक है, आउटर फ्रेम तो हमारा ठीक है, बट इनर फ्रेम जो आपकी इमोशनल बॉडी है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गई है. और उसी की वजह से ये जो कुछ हमने आज का टॉपिक लिया है कि इतनी फैसिलिटी होते हुए, स्पिरिचुअल फैसिलिटी आई एम टॉकिंग, देखो ना, अगर गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो देयर एंड सिट देयर एंड लिसन, राइट? लेकिन अब वो बात नहीं रही, वो रिचुअल हो गया है. हाँ, गुरुद्वारे में जाते हैं, मत्था टेक के हम नीचे चले जाते हैं, प्रसाद के ऊपर जो है उसके ऊपर ज़्यादा जोर है. जो उसने कहा है ज्ञानी जी ने, वो सब भूल जाते हैं. ऐसे ही मंदिरों में है, ऐसे गुरुद्वारों मस्जिद में है, चर्चिज में है. सो द आइडिया ये जो इनर लेयर है आपकी इमोशनल बॉडी, उसमें रिसेप्टिविटी नहीं है. वी डोंट कंज्यूम दैट स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो डिस्टर्ब है, बिल्कुल डिस्टर्ब है. और देखो जो स्पिरिचुअल बॉडी है, इट इज मेड, ये आउटर फ्रेम जो है, इट इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स. वाटर है, एयर है, फायर है, अर्थ एंड स्काई. These 5 gross elements, It's cold. Thank No, you. it's cold. Okay. Anymore. Sorry. these 5 gross elements, water, air, fire, earth and sky, these are जिससे हमारी बॉडी बनी है, जो मटेरियल जिससे हम बने हुए हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं. व्हेन वी लीव दिस वर्ल्ड, जब हमारी डेथ होती है तो ये 5 एलिमेंट्स यहीं रह जाते हैं. लेकिन इसके अंदर जो है वो सटल बॉडी है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं. सटल बॉडी में 3 कंपोनेंट्स हैं. We discussed at one time. Yes. One is your mind and your memory, जिसको इंटेलेक्ट भी कहते हैं. मन, बुद्धि और अहंकार. अहंकार मीन्स ईगो. Ego. So mind, intellect and ego, ये 3 कंपोनेंट से आपकी सटल बॉडी बनी हुई है, जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती. तो इसकी फंक्शनैलिटी अगर हमें समझ आ जाए तो वी विल बी वेरी पीसफुल. वी विल बी वेरी पीसफुल एंड once, because it is the mind over body, right? अगर माइंड आपका डिस्टर्ब है तो आपकी बॉडी ढीली पड़ जाती है. किसी को गुस्सा चढ़ा हुआ है, उसकी शक्ल देखो, यू विल बी सरप्राइज. जब वो कोई बंदा हंस रहा है, उसकी शक्ल देखो, वही बंदा है. अगर वो हंसे तो अच्छा लगता है, अगर वो गुस्से में आ जाए तो वही आप डरावनी शक्ल बन जाती है, राइट? तो अंदर से ही हुआ, बाहर से तो कुछ हुआ नहीं. बाहर तो उसके दोनों ही हाथ हैं, दोनों ही टांगे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, अंदर ही हुआ जो हुआ. तो ये हम अंदर की बात कर रहे हैं. तो जब भी हमारे माइंड में, माइंड इज एन ऑर्गन, मैं आई एम जस्ट डिस्कसिंग द केमिस्ट्री. माइंड इज एन ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस थॉट्स Oh yeah. at tremendous speed. अभी देखो हम फोरम में हैं, दिल दियां गल्लां, सुनने वाले भी हैं, हम बोलने वाले भी हैं. अभी भी आपका माइंड बहुत सारी चीजें सोच रहा है. वी थिंक वी आर लिसनिंग, लेकिन हम लिसन भी नहीं करते. हम अंदर कुछ और हो रहा है, अंदर कुछ और हो कि मैंने वहाँ जाना है, इधर जाना है. Yeah. तो ये माइंड का एक फंक्शन है, टू प्रोड्यूस थॉट्स. और जो जब थॉट्स प्रोड्यूस होती हैं, इट गोज टू द स्क्रीनिंग प्रोसेस. It is called screening process, which is called intellect. उसमें जिनकी इंटेलेक्ट, देखो, वी आर नॉट द बॉडीज, वी आर लिविंग इन द बॉडीज. ये पक्की बात है. ये बॉडी, आप बॉडी नहीं हो, आप बॉडी के अंदर रहते हो. यू आर द सोल, यू आर द स्पिरिट, यू आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ वाहिगुरु, अल्लाह, क्राइस्ट, ईश्वर.
آپ اس کے انٹیگرل پارٹ ہو، جس کو اسپرٹ کہتے ہیں، جیواتما کہتے ہیں، وچ از انٹیگرل پارٹ آف پرماتما. Oh yeah. یا تو جن کی انٹلیکٹ ایشور وائی گرو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کا اسکریننگ پروسیس از ورکنگ ایٹ دی آپٹیمم لیول. آپٹیمم لیول کا مطلب ہے کہ اب وی آر ٹاکنگ آف دی میموری. جو انٹلیکٹ کا فنکشن ہے اس میں سب سے بڑا کمپوننٹ ہے میموری، آپ کی میموری. تو جن کی اسکریننگ پروسیس اچھی ہے، وائی گرو سے جڑی ہوئی ہے، ان کا اسکریننگ پروسیس از ویری بیوٹیفلی آپٹیمم لیول ورکنگ، جس کا مطلب ہے ان پلین انگلش کہ دے آر ہولڈنگ دی گڈنیس آف ادرس اینڈ دے آر ڈیلیٹنگ دی شارٹ کمنگ آف ادرس. یہ تب ہوتا ہے when your intellect Right. is attached to the divine energy which is Vaheguru. اگر وہ آپ کی جو ایگو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، رائٹ، تو پھر یہ الٹا کام کرتا ہے. دین وی آر ہولڈنگ دی شارٹ کمنگ آف ادرس اینڈ ڈیلیٹنگ دی گڈنیس آف ادرس. Yes. تو آج کل جو ہے ہو رہا ہے دنیا میں، اتنی فیسلٹی ہے، ٹیکنالوجی از فار ایکسیلنٹ. اب اے آئی کی ایک ٹیکنالوجی آتی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو میراکل لائے کہ ود ان another 5-6 years everything will be totally revolutionized, right? In spite of that آپ کی باڈی ایسی ہی رہے گی، کیونکہ وہ بیبی ایسے ہی آئیں گے. بیبی وہ اے آئی سے نہیں آ سکتے، بیبی ایسے ہی آئیں گے، رائٹ. اور بیبی کی جو شکل ہوگی وہ بھی ایسی ہوئے گی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ پڑے گا. یا کہ جیسے پہلے سیل فون نہیں تھے تو لوگوں کی شکلیں ایسی تھیں، اب سیل فون آ گئی ود انٹیگرل پارٹ، نو باڈی کین لیو ود آؤٹ دیٹ. تو شکلیں تو ویسی کی ویسی ہیں ہماری، لیکن سب کو چینج کر دیا اس نے، اس ٹیلی فون نے یا آپ کا سیل فون ہے. آپ کا رہنا سہنا، آپ کی سوچ، آپ کی بات چیت کا ڈھنگ، سب کچھ بدل گیا، رائٹ. پہلے آپ چٹھیاں لکھتے تھے، ای میل وہ تار لکھتے تھے، اس کا جواب جو وی آر ویٹنگ کہ ان کا جواب آ جائے، رائٹ. وی ہیو گون تھرو دیٹ ٹرانزیشن، وی آر دی آئی وٹنس، وی ہیو سین دیٹ کہ ایسا ہی تھا. لیکن اب وہ سب بھول گیا. اب نہ وہ چٹھی لکھتا کوئی بات کرتا ہے. ایون ٹیلی فون کے اوپر لوگوں نے بات کرنی چھوڑ دی ہے، کیونکہ آپ میسج بھیجتے ہو، میسج. تو انٹریکشن تو بالکل ختم ہو گیا جب وی ور ہیومن بینگس. تو وہ جو آپ کی ایبلٹی تھی وہ تو آپ نے سیل فون میں ڈال دی ساری. تو ہم کہتے ہیں ہم ایڈوانس ہو گئے، لیکن اسپرچولی آپ جو ہے بیکورڈ ہو گئے، کیونکہ آپ بات ہی نہیں کرتے کسی سے، بات ہی نہیں کرتے. جب بات ہی نہیں کرتے تو سینٹیمنٹس کہاں سے آئیں گے، یا نو. رائٹ. اور دوسری چیز ہے یہ سیل فون سے اتنی ای میلز آتی ہیں، اتنے میسیجز آتے ہیں، اینڈ ایوری باڈی از بزی ان فارورڈنگ اٹ. یس. اور اس کو یہ پکا وہ بالکل بلیو کرتا ہے جو فارورڈ کر رہا ہے کہ یہ جس کو میں فارورڈ کر رہا ہوں وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بندہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، اس نے he understand what he's doing. لیکن it is all a تماشا، it is just a routine. آیا بھائی کیا، کوئی ہولڈ نہیں کرتا کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے. اگر اتنی بڑی رائٹنگز آتی ہیں، اگر میں ایک کو ہولڈ کر رہا ہوں and I challenge myself, stop it now, let me digest, let me churn it, let me squeeze it, Yes. get the juice out of it. وہ کوئی بھی نہیں کرتا. So the life has changed, right? But technology has revolutionized your outer frame. کتنا کچھ اویلیبل ہے، رائٹ. پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن جو تھا اب وہ نہیں ہے. جو ہمارے پاس جب شام کو آپ چارپائی کے اوپر بیٹھ کے جب رات ہونے سے پہلے نانی کے چارپائی پہ بیٹھ کے کہانیاں سنتے تھے ہم، نانی جی وہ سناؤ، وہ اچھی تھی، یہ اچھی تھی، اور وہ سناتے تھے. اب وہ نانی ہے
ना वो कहानियां हैं, राइट। तो कैसे डिसअपियर हो गया वो, तो ऐसा लगता है जैसे कोई इट वॉज अ ड्रीम। अब किसी ने मुझे जगा दिया है, वो अब ड्रीम में कुछ भी नहीं था, राइट। मैं तो चारपाई पे लेटा हुआ था, लेकिन ड्रीम में मैं कहीं कुछ कर रहा था। तो ऐसे ही हो गया है, हम रिफ्लेक्ट नहीं करते इन बातों को। तो ये जो मैंने आपको केमिस्ट्री बताई है कि जिनकी मेमोरी ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रही है, वो दूसरों की अच्छी बातें, मेरिट्स सेव करते हैं, और डीमेरिट्स, शॉर्ट कमिंग्स वो डिलीट करते हैं ऑन ए डेली बेसिस। This is क्योंकि मेमोरी इज नॉट स्पेसलेस, इसकी स्पेस है। तो आजकल जो हुआ है इस ट्रांजिशन में, जो भी मैंने आपसे शेयर किया है, उसमें लोगों की जो मेमोरी है वो चौक हो गई है। और ये बाई नहीं कर सकते आप, जैसे सेल फोन में तो बाई कर लेते हो, यू गेट द मैसेज आंसर की मेमोरी बड़ी, यू हैव टू बाई इट, अदरवाइज यू हैव टू डिलीट, राइट। ये करते हैं हम, right? तो ये जो हमारी मेमोरी है, इस यू कैन नॉट बाई। वो जो अल्लाह ने, वाहे गुरु ने, ईश्वर ने दी है, वो वही है, उतनी ही है। उसमें कोई जैसे आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, ये किसी के 12 नहीं है, चाहे वो कितना भी एडवांस हो जाए, राइट। ये जो शरीर है जो ईश्वर ने दिया है, वो तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन इसको हम यूज करना भूल गए, इसको हम यूज करना भूल गए हैं। इसीलिए इतनी अशांति है, इतनी हेट है, इतना डाउनफॉल हो गया है देखते देखते, राइट। और तीसरी जो बात है, ये तो है मेमोरी की बात, कि मेमोरी हमारी चौक है। उसमें चाहे हम गुरुद्वारा जाएं, चाहे हम मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, जब आपकी मेमोरी में स्पेस ही नहीं है अच्छी बात की, तो आप होल्ड कर ही नहीं सकते। वो 2 मिनट अच्छा लगेगा, और फिर हम वो जो नीचे मिलेगा खाने को, एवरीथिंग इज वॉश्ड अवे, राइट। एंड देन वी आर रनिंग फॉर द कार, और मैं लेट हो गया, राइट। तो मैंने तो वहां जाना था, ये तो बड़ा टाइम लग गया। तो ऐसी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड हु इज डूइंग दैट? इट इज अप टू मी टू अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा नहीं था। देखो, हम छोटे छोटे बच्चे जब थे स्कूल में जाते थे, राइट, मैथ मैथ के पहाड़े याद करते थे, 2 दूनी 4, 4 दूनी, लाइक दैट, राइट। right. देन वी यूज टू राइट ऑन ए स्लेट, Hmm. राइट, विद ए पेन एंड इंक ऑन ए पेपर, राइट। वो हमने देखा है, हमने देखा है। लेकिन अब अगर किसी को वो, जैसे हम बात कर रहे हैं, किसी को जो सुन रहे हैं बच्चे कोई भी, उसको समझ ही नहीं आई कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप दिखा नहीं सकते ये दवात थी, ये पेन थी, ये पेपर था, जाए। सो थिंग्स हैव चेंज, थिंग्स। ऐसे ही हमारी जो इमोशंस हैं, जो उसमें जो प्यार था ना, वो एलिमिनेट हो गया। हम अब प्यार करते नहीं हैं, हम, हमारी जो है वो लाइकिंग है और डिसलाइकिंग है। हम, किसी ने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं लाइक करना शुरू कर देता हूँ। अगर एक दिन उससे गलती हो गई तो ही इज इन ट्रबल। मैं उसकी सारी की सारी अच्छाई डिलीट कर देता हूँ, और उस छोटी सी बात को मैं मेमोरी में ले जाता हूँ। 10 साल, 15 साल मैं छोड़ता नहीं उसको। द मोमेंट दैट इंडिविजुअल कम इन फ्रंट ऑफ मी, वो जो मेमोरी है, इट इज एक्टिवेटेड, बिल्कुल, यू आर राइट 100%। मैंने राइट। लॉट ऑफ पीपल हैव सीन कि जो अभी प्रेजेंट हो रहा है वो दे डोंट लुक एट दैट, दे ओनली रिमेंबर एक पॉइंट हुआ था पनी कब, वो बिल्कुल फ्रेश है माइंड में, एंड दे ब्रिंग दैट अप। बस जब भी मिलो, तूने ऐसे ये हुआ था, ये हैव सो टेक गेट रिड ऑफ इट, डिलीट कर दो उसको माइंड में से, नो, गेट फ्रेश थिंग। जैसे आप कह रहे हो, पुराना जो है डिलीट करना चाहिए, वन शुड गेट रिड ऑफ इट। तो उसका ये जो हम बात कर रहे हैं कि भी इतनी फैसिलिटी होते हुए, स्पिरिचुअल फैसिलिटी आई एम टॉकिंग, राइट। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, सिनेमा,
and other worship places. इतनी अवेलेबिलिटी होते हुए बड़े बड़े सुंदर जो हैं वो बिल्डिंग्स बन गई हैं Yeah. जिसमें जो वर्शिप हाउसेज हैं, लेकिन हमारे पल्ले तो कुछ पड़ नहीं रहा। वो इसलिए कि बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी हैव टू करेक्ट इट। आपके अंदर जाके आपको कोई करेक्ट नहीं कर सकता। ये आपकी बॉडी है, ये आपकी मेमोरी है, ये आप आपका शरीर है, ये आपको करना पड़ेगा। कोई चीज नहीं कर सकता है। कोई सर्जन जो है वो आपकी मेमोरी चेंज नहीं कर सकता। वो उसकी अपनी मेमोरी ऐसी है जो आपको ठीक करना चाहता है। तो ये जितने आजकल मेडिसिन हैज एडवांस्ड, Oh, yeah. हमारे भी बच्चे डॉक्टर हैं, आपके भी हैं, बट लुक द वे दे आर लिविंग जस्ट लाइक यू एंड मी, Oh, yeah. राइट? सो वो बात नहीं रही है। आप देखो पहले जो डॉक्टर थे, आई एम जस्ट सेइंग कि आपने रात के 12 बजे आपको तकलीफ हुई है, आई एम टॉकिंग 50 ईयर्स बैक, तो वो जो डॉक्टर था वो अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेके आपके घर आ जाता था, Yeah. एंड देयर वाज नो बिलिंग। वो आपको दवाई देता था, और दवाई भी एक दो दवाइयाँ होती थी, ये नहीं कि फार्मेसी के थ्रू मिलियन गोलियां पड़ी हुई हैं, नहीं थी, right? 3 4 5 20 टाइप की मेडिसिन होएगी मैक्सिमम। लेकिन शरीर जब वैसे का वैसा है तो ये इतनी बिलियंस टाइप ऑफ दवाइयां कहाँ से आ गई? जहाँ तो शरीर बदला हो ना, आई कैन I अंडरस्टैंड। know. भाई किसी के 12 हाथ हो गए हैं तो उसको चाहिए ये। तो जब बॉडी इज द सेम, so then why billions types of, not million, billions type of medicines are available, right? किसने किया? हमने किया। इसलिए ये जो जितने दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवारों में हो रहे हैं, right? दो परिवार हैं, दो ब्रदर हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, they don't talk, right? So ये जहाँ ये जिस प्लेनेट पे हम खड़े हैं, इट इज ए विजिटर वीजा। वो एक्सपायर हो सकता है किसी भी टाइम, किसी को एक्सपायरी डेट का नहीं पता, लेकिन है विजिटर वीजा, पर परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है ना। वो जो हमारे पास ग्रीन कार्ड है कुछ भी नहीं है, सिर्फ विजिटर वीजा है। तो वो विजिटर वीजा कैन एक्सपायर एट एनी टाइम, राइट? वो बात जो है हम मोस्ट ऑफ द पीपल दे टोटली फॉरगेट। वो जिस तरह रह रहे हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, वो ये समझते हैं कि दे विल लिव हियर फॉरएवर, Right. राइट? सो इसलिए हमारी थिंकिंग जो है उसको हमें रिकैलिब्रेट करके उसको एडजस्टमेंट वी हैव टू डू, इमोशनल एडजस्टमेंट। और इमोशनल एडजस्टमेंट करने का मैंने अभी आपसे शेयर किया कि द इजीएस्ट वे इज कि यूज योर मेमोरी जुडिशियसली। एट द एंड ऑफ द डे देखो, 8 8 10 घंटे हम वेकिंग स्टेट में हैं, जो भी आप करते बिफोर व्हेन यू गो टू बेड, मेक इट ए हैबिट टू डिलीट द बैड थॉट्स। एंड किसी ने बुरा आपके साथ कर दिया है, कोई गलत बात कह रही है, आपकी लेग पुलिंग की है, जो भी किया है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरी मेमोरी में जाए, डिलीट इट। और उसने जो आपके साथ अच्छा किया हुआ है, जब भी किया हुआ है, उसको रिवाइव करके उसको सेव करो। एक तो आपको नींद अच्छी आएगी, एक आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। क्योंकि जब नींद नहीं आ रही है आपको तो सब कुछ गड़बड़ है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट वर्किंग, इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज, राइट? तो आंखें भी सूज जाती हैं, एंड इरिटेशन के साथ आप उठते हो सुबह, राइट? वो तमाशा सारा बंद हो जाएगा। बट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं एक्साइटेड और एजिटेटेड बंदा, आप देखो मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ कि ये जो लोग हैं लीडर हैं, राइट,
डिफरेंट कंट्री से, मैं नाम नहीं लेता। वो पता नहीं बचपन में कैसे थे, तो अब अपॉर्चुनिटी मिली तो प्रेसिडेंट बन गए, राइट। तो जो वो बचपन में था, अगर उसने ऐसी हैबिट क्रिएट की हुई है, ही इज रिवेंजफुल शुरू से ही, तो प्रेसिडेंट बनने से वो रिवेंजफुल का बिहेवियर थोड़ा जाएगा। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। दे डोंट केयर कि मिलियंस पीपल आर बीइंग बुचर्ड, दे डोंट केयर। उनको अपनी जो ईगो है, बिल्कुल। तो दैट इज वन, इतना जो डैमेज कर सकता है आदमी सोसाइटी, जो गलत लीडर्स हैं, गलत तरीके से बात, दे डिस्ट्रॉय द क्रिएशन। और गुरबानी में, भगवत गीता में ये बड़ा अच्छा संदेश है कि मेक दिस सृष्टि, क्रिएशन मोर ब्यूटीफुल विद योर एक्शंस एंड डीड्स। राइट। इसको सुंदर बनाओ, इसको सुंदर बनाओ। किसी को तकलीफ है, हेल्प। जब ऐसा एटीट्यूड हो जाता है, राइट, तो यस। यही वर्ल्ड स्वर्ग बन जाती है। फिर आपको गलत मलत चीजें दिखाई नहीं देती, जब हम करते ही कुछ नहीं है। देखो ना, मैं सेवा भाव मेरे में है ही नहीं, तो मुझे तो जो कार के बाहर अगर रेड लाइट पे कार खड़ी हुई है, तो वो जो एक बोर्ड लेके खड़ा, आई एम हंग्री, राइट। मैं देखता हूँ कि बोर्ड पे लिखा हुआ है आई एम, ही सेइंग आई एम हंग्री। तो अगर आप में कंपैशन है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप विंडो का नीचे करके, राइट, उसको $1 $5 जो भी देना दे दिया। पीछे जो आपके लाइन लगी हुई है कारों में, जो लोग बैठे हैं, वो कहें ये पागल है, ये एक्सीडेंट करवा देगा, वो ये से जो ये हट्टा कट्टा है, ये जो मांग रहा है, काम क्यों नहीं करता। उनकी थॉट्स ऐसी हैं। लेकिन जो आपने प्रैक्टिस की, राइट, कंपैशन की, वो उनको पता ही नहीं है। सो यू डिड, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ? मैं कंपैशन की कर रहा हूँ प्रैक्टिस, कि क्रिटिसिज्म की? अगर मैं कंपैशन की करूँ, अगर मैं बोर्ड लेके वहाँ खड़ा हूँ, आपको पता चलेगा बोर्ड लेके खड़ा होना कितनी ह्यूमिलिटी है। इट इज़ वेरी ह्यूमिल। इतनी शर्म वाली बात है, अगर मैं बोर्ड लेके खड़ा हूँ कि आई एम एग्री, गिव मी मनी समथिंग। आप करके देखो, फिर पता चलेगा कि इसकी माइंड, ये जो मांग रहा है पता नहीं क्या, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। लेकिन मेरी थिंकिंग ये होना चाहिए कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हाट ही इज सेइंग एंड डूइंग। तो मैंने ये $5-10 दे दिए, तो वो मैंने एक अच्छी हैबिट क्रिएट की है अपने में। और फिर भी जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई विल कंटिन्यू। तो व्हेन यू कंटिन्यू फॉर 9 months such acts of compassion, it will become your integral part of personality and you will be a compassionate person. ये मैं कहता। तो इसी तरह से जो सब इंडिविजुअल हैं, जो हमें सुन भी रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्रिएट कंपैशन। कंपैशन के थ्रू वो गॉगल्स लगा के फिर देखो कि दुनिया में कितनी सफरिंग है, राइट। इतने इतने अच्छे भजन हम गाते हैं, इतने इतने अच्छे शब्द गाते हैं, वाहिगुरु की स्तुति करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं। तो बंदों की भी स्तुति करो, जिनको आप कर सकते हो करो। ये नहीं, दिखावा नहीं। ये है कि भाई ये जो जो मैंने किया है, इट इज माई गोइंग इन टू माई पर्सनैलिटी। तो जो हम कह रहे हैं कि इतने गुरुद्वारे हो गए, इतने मस्जिद हो गए, इतने सिनागॉग हो गए, टेम्पल्स हो गए, मस्जिद हो गए, तो आदमी की जो लाइफ लाइफ है, डज नॉट मैटर वो उसकी एथनिसिटी क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एथनिसिटी, जो आप कहना नहीं चाहते, सभी यही कर रहे हैं। इसलिए दुनिया में इतनी हेट हो गई। वही आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, यू वेंट टू द अदर कंट्री, राइट, एट ग्रास रूट लेवल, पीपल वांट टू एम्ब्रेस यू, पीपल वांट टू एम्ब्रेस यू। लेकिन जो ऊपर की लेयर है, वो आपको मिलने नहीं देगी। उन्होंने तो आपको 10 मील, जब दूसरा कंट्री 10 मील दूर था, उन्होंने तो आपको परमिशन नहीं दी। और ऊपर से जो मर्जी कहते रहो आप, राइट। क्यों?
کہ اٹ از ہیٹ بیس، ہیٹ بیس، رائٹ؟ کچھ بھی ہم کہیں، لیکن جن سے آپ ملے، جنہوں نے چائے پانی آپ کو پلایا، ان کی بھی فیلنگ یہی ہیں کہ جیسے آپا ختم ہو، ہم گلے لگیں، یا اپنے گلیے بازار ایسے ہی تھے، سارے اکٹھے تھے. تو ایسی کی ایسی چیز یہ پریواروں میں ہو گئی ہے. پریواروں میں اچھے مکان ہو گئے لوگوں کے، بڑے بڑے مکان ہو گئے. جب ہم نئے نئے آئے تھے، ایک اپارٹمنٹ میں 30 40 لوگ اکٹھے ہوتے تھے ایوری ویکینڈ، اور یہ پارٹیاں ہوتی تھی، رائٹ؟ اب اتنے بڑے بڑے مکان ہیں، خالی پڑے ہیں، نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، رائٹ؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسی لیے ہو گیا کہ ہم نے اپنی ایموشنز بدل دی. تو ریوائیو یور ایموشنز، چیلنج یور سیلف. دیکھو، دیر آر 8.4 ملین ایوولوشنز ہیں. 84 لاکھ جونیاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 84 لاکھ جونیاں جی. تو 84 لاکھ جونیوں میں ہیومن باڈی کو اٹین کرنا ان دی تھرو دی تھیوری آف ایوولوشن کتنے ملین ایئرز لگتے ہیں. تو اس میں جو آپ اور میں ہوں ان ہیومن فارم، اٹ از دی اپیکس پوائنٹ آف کریشن. اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. تو اتنی بڑی گھوڑ، تبھی کہتے ہیں منوش جنم بڑا درلبھ ہے. درلبھ تو ہو گیا، لیکن اب درلبھ کام بھی تو کرو، وہ ہم کر نہیں رہے. اس لیے دنیا میں ساری ہوچ پوچ مچی پڑی ہے. اتنی ملٹریز ہو گئی ہیں، اتنی جو ہے وہ آرمامنٹ اتنے لیتھل ہیں. تو وہ 10 منٹ میں ساری دنیا ڈسٹرائے کر سکتے ہیں، رائٹ؟ اس طرف دھیان ہے، ڈسٹرکشن کی طرف. کریشن بھی جو ہے، جیسے ہم دوسروں کی بری باتیں جانے نہیں دیتے اپنی میموری سے، ایسے ہی نیشنز کر رہی ہیں. Nations are doing exactly the same thing. Yeah, they're spending so much money on this ammunition, guns, وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے کتنے سارے وہ انہوں نے $1,000 millions and millions of dollars they're spending, billions of dollars they're spending. Billion. This kind of thing. If the same amount of money if they spend for the children, animals بھی کتنے cruelty behave ہوتے ہیں، ان میں بھی کتنا cruelty ہوتی ہے. بچے جو بھوکے ہوتے ہیں، they are hungry, they don't have any food. اس پر دھیان کریں instead of doing this protection. اٹیک کرنے کے لیے اتنے گنز اینڈ ایمونیشنز اینڈ کتنے وہ جو وینز اینڈ ٹرکس اینڈ ایئرپلینس جسٹ ٹو پروٹیکٹ دا کنٹری. بامز یہ وہ کتنا پیسہ خرچتے ہیں. اور دیکھو جو رچ نیشنز ہیں، وہ جو ویسٹ فوڈ ہے پہلے وہ سی میں پھینک دیتے ہیں. لیکن جو غریب کنٹری ہے، اگر اس کی تھنکنگ ان سے نہیں ملتی، اگر کوئی کمیونسٹ کنٹری ہے لیٹ اس سے، اور وہ غریب کنٹری ہے، میں کیپٹلسٹ ہوں، رائٹ، میرے پاس سب کچھ ہے، آئی لیٹ دیم اسٹاپ. نیشنل لیول پہ میں ایم ٹاکنگ. اور اس کو منیمائز کرو، چھوٹے روپ میں دیکھو، تو آدمی ایسے ہی کر رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جو ویلفیئر تھنکنگ نہیں. ویلفیئر اس میں دیکھو، جو لوگ پر کرو آپ بڑے پاپولر ہو، رائٹ، لوگ آپ جو آسے پاسے لوگ ہیں وہ ٹانگ کھینچنے میں بڑے مہر ہیں. Yeah, that's what they do. وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی اس انڈیویجول نے اتنی محنت کی ہے اور اتنا بھلا کیا لوگوں کا، لیٹ می پیٹ ہر، لیٹ می گیو مائی شولڈر، پٹ یور فٹ آن مائی شولڈر. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو انڈیویجول لیول پہ بھی نہیں ہو رہا، نیشنل لیول پہ بھی نہیں ہو رہا. کسی نے کہہ دیا کہ میں کمیونسٹ ہوں کنٹری نے، تو جو کیپٹلسٹ تھا وہ ختم ہو گیا. This is how, that is why the world is divided, deeply Yes. divided. And جیسے نریندر جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ this exactly the same پورٹ جو کہہ رہے ہو، یہ تو لارج اسکیل میں ہے نا. چھوٹے اسکیل میں دیکھو نا، وہی چیز، یہی اسٹوری، یہی سینیریو چھوٹی چھوٹی جگہ میں. دس از واٹس ہیپننگ، دیٹ از اسپریڈنگ، اینڈ دس از واٹس ہیپن. دا ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ یہ ہو رہا ہے دنیا میں. بٹ اٹ اسٹارٹس فرام دا بگننگ، فرام یو آر ویئر یو آر. اپنے سوسائٹی میں دیکھو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہی چیز ہو رہی ہے.
हो रही है वो चीज लार्ज स्केल में कंट्रीज वर्ल्ड में कंट्री प्रेसिडेंट बन गया, ये बन गया, वो लार्ज स्केल में है, बट स्मॉल स्केल में भी यही चीज हो रही है, एग्जैक्टली द सेम थिंग. दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम So that is our discussion point. फॉर टुडे. कि ऐसा क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि हम बदल गए. अगर फर्ज करो मैं कहूँ कि मैंने ऐसा नहीं करना, राइट, तो देन आई शुड प्रैक्टिस नाउ. वो हम प्रैक्टिस तो मैं करता नहीं हूँ, कोई भी नहीं कर रहा. तो अगर प्रैक्टिस करें तो दुनिया में जिसको वर्ल्ड पीस कहते हैं ना, या वर्ल्ड पीस हो सकती है. वर्ल्ड पीस स्टार्ट्स विद मी, विद यू. अगर मैं ही अशांत हूँ, मैं पीसफुल नहीं हूँ, तो वर्ल्ड तो बहुत बड़ी चीज है. वर्ल्ड तो एक एक से बनी है. राइट. तो सो इट इज अवर जो डिस्कशन है उसका जो मेन पॉइंट यही है कि चेंज योरसेल्फ, बिकम पीसफुल. इट इज योर ड्यूटी. ये कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल. राइट. तो जैसे कोई बंदा चला जाता है एब्रप्टली, अच्छा वाला खा पी रहा होता है तो चला जाता है, फाइनल कॉल आती है, ही हैज टू गो, वो चला जाता है, राइट. तो वो चला गया, राइट. तक सार तो कुछ लेके नहीं गया, वो तो रोटी खा रहा था उस टाइम. आवाज आई तो ऊपर जाना पड़ा, राइट. अगर हम इस बात को, इस मंत्र को याद रखें कि आई एम ए विजिटर, ये मेरे मकान, दुकान, कारें, बैंक बैलेंस, ये ऐसे ही रहेंगे, ये यूज करेंगे, सोसाइटी यूज करेगी, क्योंकि हमने भी किसी के यूज किए हैं. देखो हम स्कूल गए तो टीचर तो पहले ही थे, अब मैंने तो टीचर बनाया कोई नहीं. कॉलेज गए, प्रोफेसर थे, कॉलेज बना हुआ था, ब्यूटीफुल बिल्डिंग. मैंने तो सिर्फ वो 25 30 100 डॉलर रुपया फीस दी, राइट. कॉलेज में एडमिशन ले ली, बाकी तो सब कुछ सोसाइटी का था, राइट. ऐसे ही हम इस सोसाइटी के थ्रू बने. एवरीथिंग बिलोंग टू सोसाइटी आल्सो. राइट. आप तो कुछ लाए नहीं, खाली हाथ, हम कहते खाली हाथ आए खाली हाथ जाना, राइट. लेकिन जब आने की बारी आती है तो हम वकीलों के चक्कर लगाते हैं, बिल बनाते हैं, लिविंग ट्रस्ट बनाते हैं, राइट. तो जो कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट करते हैं बीना जी, उसमें आपका तो नाम ही नहीं होता. आप खुद कह रहे हो 20% इसको, 30% इसको, 40%, बिकॉज यू नो कि मेरे साथ तो कुछ आना नहीं. या तो कहो 50% आई विल टेक एंड 50% इनको दे दो, बच्चों को दे दो. जो आप खुद कह रहे हो कि 50 इसको दे दो, इस बच्चे को 20 30 एंड ऑल दैट. अपने लिए एक भी परसेंटेज नहीं आप रखते, राइट. और आपको पता है ये लीगल डॉक्यूमेंट है, इट विल बी एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें लीगल फोर्स है. जो कोई ये नहीं कि जो इसमें शक्ति नहीं है, शक्ति है उसमें डॉक्यूमेंट में, लेकिन उसमें आपका नाम नहीं होता. सो व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कि दुनिया में ये हो क्या गया. दुनिया में हो क्या, देखो अब हस्बैंड वाइफ में भी इतना प्यार नहीं है, दो ही बंदे रह रहे हैं घर में, घर बात बहुत, बहुत बड़ा, राइट. तीसरा तीसरा बंदा जितनी देर आप बुलाओ नहीं, नोबडी एंटर्स. पहले ऐसा नहीं था. पहले अगर मैं उस शहर में गया हूँ तो मैं आई मेक श्योर मैं विनय जी को मिल के आऊँ, राइट. अब मैं उस गली में भी जाऊँ आई विल रिंग दी बेल कि जी मुझे तो बुलाया नहीं है, जब वो कहते हैं ये करने की आग, राइट. ये हमने सोसाइटी चेंज की है. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज योरसेल्फ, चैलेंज योरसेल्फ एंड मेक दिस सृष्टि, मेक दिस क्रिएशन मोर ब्यूटीफुल विद योर डीड्स, विद योर एक्शंस, विद योर थॉट्स. तो उससे ये आवर टॉपिक रिलेट्स टू दैट, इन दैट डायरेक्शन, कि ये जितना कुछ दुनिया में हो रहा है, मैन इज रिस्पॉन्सिबल एट माई ओन लेवल. वो जो प्रेसिडेंट है वो कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मैं अपने घर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए वैसे ही रिस्पॉन्सिबल हूँ जैसे वो प्रेसिडेंट को हम कहते हैं ये साला ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता. ऐसे हमें भी चैलेंज करना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता, राइट. तो अब देखो पीपल आर गेटिंग इन दैट ब्रैकेट 60 70 70 80, like that bracket. There are a lot of people in that bracket, right?
So everybody knows most of the time is gone. Yes. It is the last phase. तो अगर ये मैं मानूं कि लास्ट फेज है तो each day is very precious. Fresh. Yeah. Right? So now I should do certain things at my own level. ईश्वर से वाहिगुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे शक्ति दो, मुझे विजडम दो कि मैं ऐसा करूं. मैं आपकी बनाई हुई मुझे कुछ नहीं चाहिए. आपकी बनाई हुई सृष्टि को मैं आपकी हेल्प कर सकूं. तो अगर मेरे ऐसे विचार बदल जाएं तो hate will convert into compassion. Compassion. Yeah. Jealousy will totally eliminate it. Competition will not be there. I will be ready to help somebody who is underprivileged. लेकिन अब हम underprivileged का advantage लेते हैं Yep. और Yep. help नहीं करते. So these are the thoughts which we wanted to share through this platform, and we selected that topic also. In spite of so many temples, so many gurdwaras, so many masjids, synagogues, churches, the quality of human being is totally deteriorated, and that is why the whole globe is turmoil with wars, conflicts, killing, and brutality. वो अगर हम सुधरे, पंजाबी में कहते हैं कि मैं सुधरा तो जग सुधरा. जग तभी सुधरेगा जब मैं सुधरूंगा, जब आप सुधर. तो that is the Yeah, that's very. आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया है. तो आज का टॉपिक जो है हमने आज I hope all of you really will try to think of what Narinder ji said and try to follow that and try to. अगर आपको दोबारा सुनना है तो हमारा तो प्लेटफॉर्म खुला हुआ है 24 hours a day, 7 days a week. जब भी जा सकते हो and you can listen to the whole program all over again just to reinforce what you heard because it's a very important topic and जो अपने ऊपर we have to work hard on ourselves. अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला. The world has to start with you. You have to do something yourself. Then only you can start doing things. तो compassion होना चाहिए. We have to let go of all the things which happened long time ago. And the same philosophy goes to the world. World war जो ये सब होते हैं because पहले उसने ये कहा था उनकी भी यही बात है. The words are the same thing. They have the same problem that society होती है तुम्हारे घर के पास ही. Neighbors, friends, जो भी है, they have the same thing. The world is doing the same thing. This is how it spreads. So why not stop and of course keep on praying for the world peace prayer. Narinder ji aate hain, we do it. आप भी करें. Everybody should do the world peace prayer. I think suggest every day to bring some peace and start with yourself. Start with yourself, and that's how it works. So I would say that's the conclusion for today. But we will continue with this kind of topics, and when Narinder ji has time and when we schedule an appointment, and we can come and listen to all this again. So thank you all for joining me today, and let me see who there are. A few people. Thanks so much for listening, and do forward the programs to your friends, and also if you didn't fully understand or you fully didn't comprehend, please go back and listen to it because हमारा program तो is there all the time. It's not. You can go anytime to Dil Diyan Gallan and listen to it. So thank you very much for joining today. And Narinder ji, thank you. आपको भी सब नमस्कार आने के लिए. Thank you so much. And हमारे next week के 2 program है Wednesday को with Gautam and Rimple from India. And a good topic. आप भी साथ past life के बारे में होंगे. Okay. That's interesting for you. And next Friday is a holy day. उस दिन है ही होली और हमारा भी प्रोग्राम होली उसका दिन है तो हम सोच रहे हैं कि होली का we'll have a little gathering with some friends. I mean DGG friends. They'll be coming and we'll be celebrating Holi next Friday. So don't forget to join. Next week का schedule मैंने बता दिया आपको. So thank you so much Narinder ji. आपको thank you so much for coming. And I really appreciate it. And my regards to Mani ji. And मिलते हैं soon. We'll meet. मिलते हैं. ठीक है? Thank you. Have a wonderful weekend, everyone. Happy Shukrana to all. Thank you. Thanks. Thank you. Bye-bye.